In the previous video, we have completed the transmission of nerve impulse across the synapse. And now in this video, we are going to learn the central neural system. तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, it includes the two important organs. One is brain and second one is spinal cord. So first is the human neural system includes कौन से? First is brain and second is spinal cord. Spinal cord. दोनों से बनी हुई है। अब ये जो ब्रेन है, दैट ब्रेन इज क्या है? तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड सेकंड ब्रेन एक्ट एज कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्रेन। कौन से? ब्रेन जो है, ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन of our body. So first point regarding brain के बारे में क्या था कि brain is central information processing organ of our body. Second, brain act as control and command system of our body. So second is brain act as control and command system of our body. Right. ये होने के बाद हमारा जो ब्रेन का लोकेशन क्या है? तो ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल। हमारा जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है। हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखा है कि स्कल के अंदर देयर आर 8 फ्लैट बोन्स एंड वो टुगेदर क्या बनाते हैं? जो कैविटी बनाते हैं उसे हम कहते हैं क्रैनियम कैविटी एंड उसके अंदर आवर ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड। सो इसको मैं ब्रेन जो है कहाँ है लोकेशन? ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल के अंदर एंड हमें पता है स्कल के अंदर क्या है? तो देयर आर 8 cranial bones, 8 cranial bones and 8 cranial bones forms क्या बनाया इन लोगों ने? 8 cranial bones forms the cavity, उसे कहते हैं हम cranium cavity। cranium cavity मतलब फर्स्ट our brain is well protected inside the skull and skull के अंदर एक cavity है that is the cranium cavity जो 8 flat bones से बनी हुई है and उसके अंदर हमारा brain is well protected, right? अब skull के अंदर inside the skull, ये जो skull है inside the skull मतलब skull के अंदर फर्स्ट स्कल उसके अंदर ब्रेन है। अब इनसाइड द स्कल जो हमारा ब्रेन है इज कवर्ड बाय इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। ब्रेन इज कवर्ड किया गया कवर्ड बाय 3 cranial meninges, right? मतलब इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर आवर ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3। ये स्कल है, राइट? समझो दिस इज स्कल और ये जो ब्रेन है एंड स्कल के अंदर भी द स्कल इज द ब्रेन इज कवर्ड बाय द 3 cranial meninges मतलब 3 layers, 3 coverings। कौन से? उसे हम कहते हैं वी कॉल इट एज cranial meninges। कौन से cranial meninges है? नंबर 1 आउटर, जो आउटसाइड है दैट इज आउटर लेयर एंड उसे क्या कहते हैं? आउटर लेयर इज ड्यूरा मैटर। मिडल लेयर एंड मिडल लेयर को जो cranial meninges है उसे कहते हैं arachnoid matter। मिडल इज arachnoid matter।
एंड इनर इनर जो लेयर है cranial meninges का, and that is pia mater. Pia mater, right? And जो pia mater जो है that is in contact with, in contact किसके contact है, in contact with brain, मतलब skull, उसके बाद these three cranial meninges and dura, arachnoid and pia. So pia के बाद the brain spot. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पाया मैटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ द ब्रेन. सो दीज आर द थ्री क्रैनियल मेनिंजेस. एक बार फिर से रिव्यू करता हूँ. Our brain is well protected inside the skull, right? अब inside the skull direct brain नहीं है. There is a gap, and that gap is cranial meninges. इसलिए inside the skull brain is covered by the three cranial meninges. For example, ये अगर skull है, right? अगर skull है, तो there are three cranial meninges. One, second, and third, and then brain stem, right? So first जो होगा skull होगा, and then जो three है, these are cranial meninges. कौन से? Dura, outer, middle, arachnoid, inner, pia, and that pia के बाद ब्रेन स्टार्ट. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पाया मैटर इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन, ब्रेन से कांटेक्ट, राइट? सो दिस इज व्हाट द थ्री क्रैनियल मेनिंजेस व्हिच कवर द ब्रेन. एंड याद रखने के लिए सिंबल्स आर वेरी पॉपुलर फर्टिलाइजर, दैट इज DAP, ड्यूरा आउटर, arachnoid middle, and pia is DAP, that is the popular fertilizers used by farmers, right? अब ये होने के बाद विल डिस्कस द ब्रेन. ब्रेन कौन से पार्ट से बना है, कौन से पार्ट में डिवाइड है. तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स: forebrain, midbrain and hindbrain. So brain is divided into the three parts. First one is forebrain, then midbrain, and then hindbrain. Right? Forebrain, midbrain and hindbrain. तो उसमें से फर्स्ट forebrain, we'll discuss forebrain. So हमारा जो forebrain है, that forebrain is made up of three parts, or it includes the three parts. कौन से? First is cerebrum. First is cerebrum, and then thalamus, and then hypothalamus. Hypothalamus. मतलब इन थ्री पार्ट्स से सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इन तीन पार्ट से क्या बना हुआ है, तो ब्रेन. राइट? सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज forebrain. We'll go one by one. So first we'll discuss the forebrain. So forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. अब ये जो cerebrum है, cerebrum, यहाँ पे cerebrum का पार्ट लिखा हूँ. Forebrain का फर्स्ट पार्ट, that is cerebrum. Cerebrum. अब ये जो cerebrum है, cerebral forms the major part of our brain. हमारे ब्रेन का जो मेजर पार्ट है, तो that is cerebrum. तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ कि रिगार्डिंग cerebrum, it forms the major part of our brain, right? Of our brain. अब जो सेरेब्रम में दिखता है ऊपर वाला, ये पूरा ऊपर वाला, दिस इज नॉट द सेरेब्रम. इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज द सेरेब्रम. ये सामने से अगर कहोगे, सामने से, तो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको, दैट इज द सेरेब्रम.
एंड ये सेरेब्रम सब प्लेन नहीं है, इट हैव द होल इनटू द फोल्ड्स, क्या है उसके ऊपर फोल्ड्स है, बल्जेस है, फोल्ड्स है। अब ये जो बल्जेस है, दैट बल्जेस इज सल्साई, एंड ये जो डिप्रेशंस है, दैट डिप्रेशंस आर नोन एज गायराई। तो जो सेरेब्रम है which form the major part of the brain, ये वाला, right, this is dorsal view, ऊपर वाला जो होगा ये ऊपर वाला, that is dorsal view, and उसके नीचे ये जो होगा that is ventral, मतलब inside. So these are not the प्लेन नहीं है, it is thrown into the folds, and उसे कहते हैं जो bulges है ऊपर वाला पार्ट sulci, and जो depressions दिखा रहे हैं these are gyri, right, sulci and gyri. अब ये जो सेरेब्रम है पूरा का पूरा सेरेब्रम, लाइक यहाँ पे निकालते हैं, ये जो पूरा का पूरा सेरेब्रम इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, ये जो है इज डिवाइडेड इट इनटू द डीप क्लेफ्ट, एक डीप क्लेफ्ट जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज सेरेब्रम, राइट, एक डीप क्लेफ्ट जाती है यहाँ से which divides cerebrum into two parts, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. So cerebrum में a deep cleft divides cerebrum, कैसा, longitudinally, longitudinally, longitudinally into कौन से, right cerebral hemisphere, cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, right and left cerebral hemisphere. So यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, मेजर पार्ट है cerebral hemisphere forms the major part, this right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, and ये जो deep cleft है that divides the cerebrum into the right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere, right, that is. अब ये जो cerebral hemisphere है, ये जो दो, these two cerebral hemispheres 1 and 2, these are connected by the tract of nerve fibers, वो सी शेप है, यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि ये हमें दिख रहे हैं, ये है, ये पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर डॉर्सल, ये वेंट्रल, अब ये जो थंब दिख रहे हैं, that that connect your thumb, that connect these two cerebral hemisphere, and these are C-shaped, and these are the tract of nerve fibers, and उसे कहते हैं corpus callosum, उसे क्या कहते हैं, corpus callosum. अब ये जो two cerebral hemispheres है, these two cerebral hemispheres, cerebral hemisphere जो है, हेमिस्फीयर कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट है, कनेक्टेड बाय सी शेप्ड, सी शेप्ड कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम क्या है, तो कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है, नर्व फाइबर का बंच है, उससे एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। सो क्लियर कट सी द डिफरेंस, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या है, तो सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सेरेब्रम है इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, दो पार्ट में, दो हिस्सों में बटा हुआ है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो ये जो है these two कैसे कनेक्ट है, तो these are connected by a C-shaped corpus callosum, ये उसको कनेक्ट करता है। तो ये कैसा है, वैसा, उसका अगर सेक्शन देखेंगे तो दिस इज
वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट। अब ये जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, these two cerebral hemispheres are connected by C-shaped corpus callosum. This is C-shaped corpus callosum. कॉर्पस कैलोसम क्या है? तो कॉर्पस कैलोसम इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, नर्व फाइबर को ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर और नर्व फाइबर का ब्रांच है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो लेयर ऑफ सेल्स है उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ये पूरी बात। सेरेब्रल, द लेयर ऑफ सेल्स जो कवर करती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। तो सेरेब्रल वेरी क्लियर, राइट। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। The layer which which covers the cerebral hemisphere, हेमिस्फीयर उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज आल्सो रेफर्ड एज, उसे ही क्या कहते हैं? इज आल्सो रेफर्ड एज ग्रे मैटर। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। Why gray matter? Because they have the grayish appearance. अब ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि वहां पे एक्सॉन की जो सेल बॉडीज होती है दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए दे हैव द ग्रेइश अपीयरेंस। क्यों ग्रेइश अपीयरेंस है? बिकॉज सेल बॉडी सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए दे अपीयरेंस, उनका अपीयरेंस होता है ग्रेइश, इसलिए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ ग्रे मैटर, राइट। अब जो ग्रे मैटर है कौन सा? सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। द लेयर व्हिच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये अगर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे जो सेल्स कवर्ड है, the layer of the cells which cover the cerebral hemisphere उसे कहते हैं cerebral cortex. Cerebral cortex is also referred as the gray matter. Why? Because the जो न्यूरॉन होती है, तो न्यूरॉन की सेल बॉडीज ज्यादातर वहां पाई जाती है, सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड देयर, therefore it is called as gray matter. अब ये जो ग्रे मैटर है, that gray matters how सेंसरी एरिया, वहां पर कुछ सेंसरी एरिया है, कुछ मोटर एरिया है, कुछ ऐसे एरिया है which is neither sensory nor motor, राइट। तो क्या है ग्रे मैटर में? तो ग्रे मैटर हाउ मोटर एरिया, मोटर एरिया है, एरिया मतलब प्लेस, वहां पे सेंसरी एरिया है, सेंसरी एरिया भी है, एंड यहाँ पे ऐसे एरियाज है, तो एरिया विच इज नाइदर मोटर नॉर सेंसरी, neither motor nor sensory, right? ऐसे एरिया है, एंड मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया है, एंड neither motor nor sensory area, and these area perform the complex function. ये क्या करते हैं? परफॉर्म, कौन सा फंक्शन करते हैं? परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कौन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन, मेमोरी। तो देखिए, तो दिस परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कौन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है? नंबर वन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, इंटरसेंसरी
association, right? Intersensory association. Second, communication. थर्ड फंक्शन कौन सा करना है? तो मेमोरी, राइट? कौन सा? तो मेमोरी। तो देखो फिर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जहां पर सेल्स है, सेरेब्रल लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम भी ग्रे मैटर हुआ है, सेल बॉडीज आर कॉन्सेंट्रेटेड। सेल ग्रे मैटर पे बहुत सारी एरियाज है, सम मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड द एरिया व्हिच इज नाइदर मोटर नॉर सेंसरी, एंड दीज एरिया परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स, उसे कहते हैं, ये तीनों मिला के जो एरिया बनता है उसे कहते हैं एसोसिएशन एरिया। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसोसिएशन area. Association area. And these association area is able to perform the complex function. कौन से? Intersensory association, number one, communication, second, and then memory. Right? Then memory. So all that ये हो गए cerebral cortex, brain matter. अब inside the cerebral hemisphere क्या है? तो inside the cerebral hemisphere there is the another matter, and that is white matter. इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके अंदर क्या है? व्हाइट मैटर। एंड अब व्हाइट मैटर मतलब क्या है? कि वहां पे एक्सॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, एक्सॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, एक्सॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। एंड बिकॉज ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन पे क्या होती है? तो एक्सॉन पे माइलिन शीथ होती है, राइट? उसे क्या कहते हैं? तो इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर कैसा है? ड्यू टू व्हाइट अपीयरेंस। एंड व्हाइट अपीयरेंस क्यों है? बिकॉज द एक्सॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड देयर। एक्सॉन ज्यादातर पाए जाते हैं, हमें पता है एक्सॉन में क्या है? तो माइलिन शीथ है, and because of that myelin sheath they appears white, white appearance. So this is inside the inner part of the cerebral hemisphere is white matter and outer is gray matter. Gray matter का दूसरा नाम है cerebral cortex, right? So this is the one part of the cerebral hemisphere. कौन सा? cerebrum. अब देखो सेरेब्रम का डायग्राम निकालने के बाद, सेरेब्रम लर्न करने के बाद क्या है? तो फॉर एग्जांपल ऐसा, दिस इज व्हाट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, राइट? आउटर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दैट इज द व्हाइट मैटर, सॉरी ग्रे मैटर, एंड देन इनसाइड व्हाइट मैटर। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद ये पूरा at the center there is a part, and उसे कहते हैं सेरेब्रम, एंड सेरेब्रम के बाद जो पार्ट है दैट इज थैलेमस, थैलेमस। एंड थैलेमस के हाइपोबेस देयर इज हाइपोथैलेमस। और ये जो है ऊपर वाला, दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसा, राइट? मैंने जो लिखा है आपको ये ऐसे लिखा है, दिस इज डॉर्सल, राइट? एंड एक ही अगर निकालोगे तो इस साइड उसके अंदर, मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर यू कैन सी द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड, इनसाइड ऑफ द, तो हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। सो सेकंड थैलेमस क्या है? जो सेरेब्रम है ये, उसने उसको रैप करके रखा है, सेरेब्रम रैप्स, पकड़ के रखा, cerebrum wraps around the structure, wraps around a structure, and उसे क्या कहते हैं? Structure called thalamus, called thalamus. That is the second part of the forebrain. क्योंकि हमें पता है कि forebrain consists of three parts. First one is the cerebrum, second one is the thalamus. तो cerebrum wraps around the structure, उसे क्या कहते हैं? Thalamus. अब thalamus क्या है? Major coordinating center. Thalamus क्या है? It's a major coordinating center. Thalamus is major
कोऑर्डिनेटिंग मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्या 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 करता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, तो क्या करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नल। क्या करता है मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटर और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर which coordinate the motor and sensory signal. Major coordinating center for motor and sensory signal. That is another point. So cerebral hemisphere, gray matter क्या है association area. And association area क्या काम करता है वो हमने देखा. Second one is the thalamus. Cerebral neck structure को wrap करके रखना है उसे कहते हैं thalamus. And thalamus क्या है तो major coordinating center for motor and sensory signal. Right? Motor and sensory signal. अब थैलेमस के पीछे बेस हाइपोथैलेमस, राइट? तो बिलो द थैलेमस देयर इज अ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या है तो हाइपोथैलेमस इज वेरी पॉपुलर। हाइपोथैलेमस हैव द मेनी सेंटर्स, बहुत सारे सेंटर्स हैं एंड these centers control or these centers are responsible for क्या करते हैं is control body temperature or for eating and drinking. So below the thalamus हाइपोथैलेमस क्या है बिलो द थैलेमस हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस क्या है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस अब हाइपोथैलेमस क्या है तो हाइपोथैलेमस के ऊपर बहुत सारे सेंटर्स हैं इट हैव द नंबर ऑफ सेंटर्स हाइपोथैलेमस में क्या है इट हैव और it has number of centers number of centers and उन centers का नाम क्या है these centers control these centers is responsible to control first body temperature and second or for eating and drinking or for eating and drinking कौन सा hypothalamus thalamus major coordinating center for motor and sensory signaling below the hypothalamus there is hypothalamus and hypothalamus have a number of centers and उनका काम क्या है to control body temperature and for eating and drinking और for eating and drinking अब क्या है ये दोनों होने के बाद थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वन इज द सेरेब्रम सेकंड वन इज थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस उसके बाद another important that is inner part of the cerebral hemisphere कौन सा अब cerebral hemisphere पता है लिसन कौन सा inner part of cerebral hemisphere inner part of the cerebral hemisphere that is cerebral cortex right plus group of associated deep structure first one is inner part of the cerebral hemisphere and a group of associated deep structures कौन से amygdala and hippocampus amygdala and hippocampus दोनों मिला के क्या बनाते हैं दोनों मिला के बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम फॉर्म लिम्बिक सिस्टम दोनों मिला के क्या बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम कौन से इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कौन से अमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस दीस आर स्ट्रक्चर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इनका ग्रुप है दोनों मिला के क्या बनाते हैं
लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम और उसे लिम्बिक लोब भी कहते हैं, राइट। अब लिम्बिक सिस्टम प्लस, not only limbic system plus hypothalamus, that is the third part, limbic system plus hypothalamus दोनों मिला के क्या करते हैं, लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus control, क्या करते हैं, control the three important functions. First one is regulation of sexual behavior, regulation of sexual behavior of human, right? Called limbic system plus hypothalamus. Hypothalamus is the part of the forebrain. Limbic system is formed by the inner part of the cerebral hemisphere and group of associated deep structure, amygdala and hippocampus. Regulation of sexual behavior. And then second one of the function है, that is the emotional reactions. Emotional reactions. कौन से emotional reactions like pleasure, then fear, wrath, excitement, right? Excitement, pleasure, fear, wrath, and motivation. Third one is motivation. तो कौन से थ्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं? नंबर वन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, फियर, रैथ एंड देन मोटिवेशन। कौन कौन? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है, दैट हाइपोथैलेमस हैव अ ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। उसके ऊपर क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, एंड उसे क्या कहते हैं? विच सीक्रेट्स द हार्मोन्स। क्या सीक्रेट करते हैं? विच सीक्रेट द हार्मोन, एंड उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। सो ये जो हाइपोथैलेमस है, that is responsible for the secretion of hypothalamic hormones like oxytocin, vasopressin, right? So these hypothalamus क्या है? तो contain the group of sensory cells है उसके ऊपर, and group of sensory cells क्या करते हैं? Secrete the hormones, secretes hormones, and उस hormones को कहते हैं hypothalamic hormones. So this is the first part of the brain, that is the forebrain. In the next video, we'll discuss the midbrain and hindbrain.